हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आप वेलकम करुच्ची। आज आम डिस्कसन करवा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप थंबनेल देखि जानि पारथिबे जहाँकि अपकमिंग एग्जामिनेशन ओट्रिपल से नर्सिंग ऑफिसर विथ CHO 5000 पोस्ट पाई मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपण में जिते भी फ्रेंड सर्किल ग्रुप समस्त को वीडियोटा शेयर करंतु जहाँफल समस्ते ए वीडियो रे आपण मान नॉलेज गेन करि पारिबे। तो मोस्ट हेल्पफुल होगा जाऊँगी जमार वीडियो स्किप करेंगे। मुझे टॉप 40 MC को डिस्कसन करवा आज। तो वीडियो जो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन ऑल रखी था जहाँफल वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर। तो लेट नक मुझे स्टार्ट करुँची। नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहला ना ए patient with COPD receiving oxygen therapy should preferable receiving oxygen through। जदि गोटे पेसेंट आम COPD से कौन ऑक्सीजन ताको नीड होची ताहले आमे कहा थ्रू रो आमे ऑक्सीजन देबा। तो ऑप्शन ए रे अछि हमर सिंपल मार्क्स, नॉन विजिबल मार्क्स, वेंचुरी मार्क्स और फिक्स स्टैंड। कहा द्वारा देबा ना आमे एक जदि गोटे पेसेंट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज थिबो ताहले आमे दबा वेंचुरी मार्क्स। ठीक अछि, ऑप्शन सी ही जिबा करेक्ट मार्क्स। काहे कि ना वेंचुरी मार्क्स रे आमे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आम कोन ऑक्सीजन ता आमे सप्लाई करि परिबा इन COPD पेशेंट रे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट को मार्क्स थ्रू दबा हमर वेंचुरी मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, the earliest ECG changes in hyperkalemia केस रे कौन देखा जाए थे ना प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, टर्ल TOF, विंडेड QRS कॉम्प्लेक्स और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जिते बेले हाइपरकालेमिया होची पोटेशियम लेवल हाई होची ताहले हमें ECG रे कौन चेंजेस देखा पाइबा ना हमरो कौन TOF टा हमरो टर्ल देखा जाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहाँ बहुत थोड़ा एग्जाम रे आछी। ठीक अच्छे। तो एर्ली साइन ऑफ हाइपरकालेमिया इन ECG होची कौन हम टर्ल पीक TOF। देन क्वेश्चन नंबर 3, which acid base imbalance expected in prolonged vomiting। जदि गोटे पेशेंट प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हेतिबो ताहले तार केस रे कौन देखा जीवो ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। कौन हेबो ना कौन हुए जेते बेले वॉमिटिंग हुए हमर कौन गैस्ट्रिक एसिड टा कौन करिथाय ना से कन्वर्ट करिथाय कौन मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो प्रोलॉन्ग टाइम जो सीवियर वॉमिटिंग हेबो तारी गैस्ट्रिक एसिड हम कौन हित करिथाय हमरो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then come to the next question. Question number 4, the antidote for heparin toxicity is। antidote for heparin नाम कौन ना विटामिन K, प्रोटामाइन सल्फेट, नालोक्सोन, अट्रोबिन। The correct answer is हमरो प्रोटामाइन सल्फेट। Then come to the next question. Question number 5, a patient develops sudden chest pain and dyspnea after surgery। गोटे पेशेंट सर्जरी के डेवलप कौन होइछे ना चेस्ट पेन देखा होइछे एवं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन द प्रायोरिटी ऑफ डायग्नोसिस आमे कौन सस्पेक्ट करबा ना निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल रिफ्यूजन और निमोथोराक्स। कौन हेबो ना हमर पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा जाए जदि अर्ली साइन सिम्पटम ऑफ ए सर्जरी जदि सडन डेवलप हेबो चेस्ट पेन कि डिस्निया होचे
ताहले कौन सब्सटिट्यूट करबा ना हमर पल्मोनारी एम्बोलिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला ना द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इज हमर लेफ्ट हमर केते हार्ट रो फोर्थ चैम्बर कौन राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कौन कहला हमर लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन कौन इंडिकेट करिथाय ना ए ब्लड प्रेशर सेंट्रल वेनस प्रेशर कार्डियक आउटपुट और इजेक्शन फ्रैक्शन कौन ना मोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इजेक्शन फ्रैक्शन इज द बेस्ट कौन हम रिफ्लेक्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। ठीक अच्छे तो इजेक्शन फ्रैक्शन होचे हमरो लेफ्ट वेंट्रिकुलर रो फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 which ECG finding is characteristic of MI। ECG रे हम कौन देखिले हम सस्पेक्ट करिबा MI बेले ना टल PUF थिबा पैथोलॉजिकल QF शॉर्ट PR इंटरवल और फ्लैटन TUF कौन ना हमरो MI केस जदि हमें सस्पेक्ट करिबा ताल ECG रे कौन चेंज देखा जाय थाए ना हमरो पैथोलॉजिकल QF। तो QF टा हमरो कौन चेंजेस देखा जाए जहाँ फल व्हिच इज इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और मायोकार्डियल नेक्रोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 8 द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक रो ड्रग ऑफ चॉइस कौन ना हमर हाइड्रोकोर्टिसोन डोपामाइन एपिनेफ्रिन एट्रोपिन एंड द करेक्ट आंसर इज हमर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक शॉक। देन क्वेश्चन नंबर 9 रे कौन करछि व्हिच इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इज मोस्टली लाइक क्रोनिक रेनल फेल्योर। को इलेक्ट्रोलाइट हमर एब्नॉर्मल देखा जाए इन क्रोनिक रेनल फेल्योर कौन ना हमर हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया हाइपरनाट्रीमिया हाइपोकैल्सीमिया। करेक्ट आंसर इज हमें रेनल फेल्योर कौन देखा जाए रेनल फेल्योर मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ कौन पोटासियम रिटेंशन होता है। पोटासियम रिटेंशन तो कौन हो ना पोटासियम रिटेंशन देखा गले कौन हम हाइपर कैलेमिया पोटासियम हाई देखा जीवा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। ठीक अच्छे सब मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्यूट किडनी इंजुरी कौन ना ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स रेनल calciculi polycystic kidney disease and the correct answer is option B nephrotoxic medication। तो nephrotoxic medication are the major cause of कौन AKI acute kidney injury। तो AKI रो मोस्ट कॉमन कॉजेस कौन का थ्रो रही था हॉस्पिटल में मेनली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग द्वारा देखा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 पहला कुस्माल रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जिते बेले कुस्माल ब्रीदिंग देखा जाए आमर कौन देखा जाए आमर मेटाबॉलिक
कौन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 12, the hallmark symptom of left side heart failure। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेल्युअर द हॉलमार्क साइन आमर कौन रही है ना पेरिफेरल एडिमा देखा जिवो, एसाइटिस, पल्मोनारी कंजेक्शन और हेपाटोमेगाली। कौन ना आमर पल्मोनारी कंजेक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 13, which laboratory value confirm acute pancreatitis। तो को लैब वैल्यू आम देखिए जाना कि acute pancreatitis है इन्फेक्शन ऑफ द पैनक्रियास। तो इंक्रीज जो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज तो इंक्रीज सेरम एमाइलेज लाइपेज, इंक्रीज क्रिएटिन, इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन। कौन आमर इंक्रीज हीमोग्लोबिन हेबनी, इंक्रीज क्रिएटिन भी हेबनी। क्रिएटिन जदि बढ़ी कौन हे ना आमर किडनी प्रोब्लेम थी। तो इंक्रीज बिलिरुबिन भी हेबनी। तो कौन रहा इंक्रीज सेरम एमाइलेज। तो कौन है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जदि सेरम एमाइलेज लाइपेज इंक्रीज देखा ताहले आम कौन जा तो पैनक्रियाटाइटिस किसी प्रॉब्लम अच्छे और इन्फेक्शन अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थायरॉक्टमी। जदि गोटे पेशेंट थायरॉक्टमी होइछि ताहले तार मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन देखा ना हाइपरकालेमिया, हाइपोकालेमिया, हाइपरकालेमिया, हाइपरनाट्रेमिया। कौन हम हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकालेमिया और हाइपरनाट्रेमिया। द करेक्ट आंसर जिते गोटे पेशेंट कौन जेहेतु थायरॉक्टमी किसी थायरॉइड किसी इंजुरी मेनली कजेस कौन करता है आमर हाइपोकैल्सीमिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम लेवलटा कौन डिक्रीज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 कहला व्हिच ग्लासोस्कोमा स्केल इंडिकेट सीवियर हेड इंजुरी। जदि गोटे पेशेंट सीवियर हेड इंजुरी थे आमर जीसीएस स्केल अच्छी EVM, E4, V5, M6। तो टोटाल जीसीएस स्कोर होचे केते आमर 15। तो सीवियर केस हेड इंजुरी आम केते ना 13 ରୁ 15, 9 ରୁ 12, लेस देन 8 और 10 ରୁ 15। एंड द करेक्ट आंसर इज सीवियर हेड इंजुरी व्हिच इज इंडिकेटेड 8 और लेस देन 8। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ ना तो पॉजिटिव बबिन्स्की साइन एडल्ट इंडिकेट। तो पॉजिटिव बबिन्स्की साइन इंडिकेट कौन करते हैं ना नॉर्मल रिफ्लक्स और अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन और सेरिबेलर डिजीज। एंड द करेक्ट आंसर इज हमर कौन हो नामर ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरो लेजन। Then question number 17, which medication is contraindicated in myasthenia gravis। तो myasthenia gravis रे को मेडिकेशन कंट्रा इंडिकेटेड नामर पाइरिडोस्टिग्माइन, न्यूरोस्टिग्माइन, इम्यूनो ग्लाइकोसाइड्स और प्रेडिसोलोन। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा इम्यूनो ग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर आप प्रायोरिटी कौन देबा ना हमर को पोजीशन ना नेक रिफ्लेक्शन, टेंडलबर्ग पोजीशन, एलिवेटेड हेड 30 डिग्री और एनकरेज टू कफिंग।
And the correct answer is mostly कौन आम हेड को एलिवेट करवा for 30 degree. So option C is the correct answer. Then question number 19, the hallmark of Parkinson disease, most important, the hallmark of Parkinson disease कौन ना hyperreflexia, intention tremor, resting tremor or spasticity. तो करेक्ट आंसर होची कौन आमर ना आमर रेस्टिंग ट्रेमर कौन होता है ना ये गोटे होचे एटा होचे क्लासिकल फ्यूचर ऑफ आमर पार्किंसनिज्म. देन क्वेश्चन नंबर 20 रे कौन कला व्हिच क्रेनियल नर्व इज प्राइमरी इफेक्ट इन बेल पाल्सी. बेल पाल्सी रे आमर को क्रेनियल नर्व ता आमर इफेक्ट होता है. बेल पाल्सी रे कौन ना क्रेनियल नर्व 3rd 5th 7th और 12th कौन ना आमर क्रेनियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व होची इफेक्ट इन बेल पाल्सी. तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मु आपण मानको नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबी. आपण मानको भिडियोटा केमती लागिला कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे एवं आपण माने बहुत सारा लाइक करछन्ते हेले शेयर के करूना. तो यथाशीघ्र आपण माने फ्रेंड ग्रुप सर्किल समस्त को शेयर करते जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट अछन्ते. ठीक अछि. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू. जय जगन्नाथ.